Good evening, dosto. Today is day 69th of consistently trying to solving lead code problems and lead code contest. Let us go to the profile and see where we stand. We still stand jobless, hopeless, and what? Worthless. But what we gain is the experience of how not to give up. Second, what we gain is we gain to choose the fight over give up. And that's it, those. Day 69 is very important. As important as the position called 69. Sorry, we don't need to go into that part of our life. Because if we don't have knowledge and a job, we will be unable to do that things. So before thinking about that thing, we should continue to solve lead code contests and evolve ourselves to the certain level such that we will get a job and the opportunity to perform 69 as a position. And that is the motivation of the day, guys. The best day of the life of the stream. The day is 69. Today, let us go to the contests and see which contest we have to which contest we have to give. I'm sorry. If I go to the contest, what the fuck is this? Why this 2 minutes? Let me open this. I have solved three, no problem. Okay, there is some. Oh fuck is this? What the fuck is this, dosto? There is some problematic situation happening into the server of LeetCode. They are unable to calculate the total time spent. No issues. We can still try to solve whatever we can. Go to contest. They have some error, I think. 7 minute, I guess, would be correct. Let's see if it is actually correct or not. It is correct. But then why? Why for the latest contest they are hugging? They may have some problem. We don't know. We can simply go to the virtual contest and we have solved 390. We have had solved 396 yesterday, and today will be 396 minus minus contest. We have to find it. Go to the past contest, and I remember that we are on page number 30. Come to this 96 we have given. 96 minus minus would be 395. And boom, dosto. This is the fucking contest which we are going to give today. And again, got demotivated, demoralized, everything at the same. I don't know why the fuck I am talking in English so much because I am not that familiar with English as of now. But one day I will be fucking based English communicate. And let's go, dosto. This is weekly contest 395. And this is the day 69th of the consistency, the persistence, the persistency. I don't know what the fuck I'm talking, but it's still the good. I am feeling good and it's good. Okay, without ado or without a further wait, we will go to the contest and we know we can do whatever we want. But I don't know what we want. Let us go to the virtual contest and try to solve.
Start participate. Join now. Let's go. Let's fucking go, दोस्तों. Find the integer, add to array 1. Okay, constant and little bit small. Go to the second. Constant and little bit. Okay, these are also small, but I think these are not equal statements, so we can solve it individually. Find the integer added to the array 1. Okay, first is you are given two arrays of equal length, nums of I and nums of 1 and nums of 2. Each element in num1 has been increased by an integer represented by the value x. Okay. As a result, num1 becomes equal to num2. ठीक है. Two arrays are considered equal when they contain the same integer with the same frequencies. Okay. Okay. Return the integer x. So we just want to find the x. It is 0, it is -5, and then it is fuck. फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए बस हमें हर किसी की. That's simple. ओके ओके ओके, फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए. अगर मैं देखूँ दो की फ्रीक्वेंसी एक है, छः की फ्रीक्वेंसी चार, छः की फ्रीक्वेंसी भी एक है और चार की फ्रीक्वेंसी एक है. मेरे को x ढूंढना है. x is increase nums of 1. We have increased nums of 1 to some. So we want to find this x. So what we can do, we can basically sort them in their order, like 2 4 6 2 4 6, and then 5 7 and 9, and then definitely we can simply find their difference. It will be 3 because we have increased with 3, and that is the difference, and that is the. Hello sir G, don't call me sir dost, don't call me sir, you can just call me noob. That's it dost. And by the way, hello dumb guy. Okay, we want to find int n nums1 dot size. Simply sort both. Sort nums1 dot begin, comma nums1 dot end, and do same with the second nums2 and nums2. Just we have to return nums1 of 0 minus nums2 of 0, and that would be the answer, दोस्तों. I guess so. There is a test case are guaranteed to where there is a x such that. Okay, so I think that is it. That is giving -3, 5, and 0. I think we have did it wrong in way. So nums2 and nums1, and that will be great. Okay, 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 okay. Submit. Accepted. No issues. Now, what is the difference in that both problem? We have given array of num1 and num2. From num1, two elements have been removed and all other elements have been increased to x. As a result, num1 become equals to num2. Okay, two array considered equal when they contain the same integers with the same frequencies. Return the minimum possible integer x. Okay, that achieves the equivalence. So simply we have to delete two integers. Length is too small, 2000 only. I'm surprised to also too small. And there always exists one x. Okay, what is they have given? They have given is the test cases are generated in a way that there is an integer x such that num1 can become equal to num2 by removing two elements and adding x to each num1. Basically हमें x ढूंढना है minimum x 7755 and
We can remove, oh, minimum possible x. Okay, remove element at index 0 and 3, adding 2 to the num 1 become 7. Yes, and adding 2 के ऊपर ऐड करना पड़ेगा 7 को, तो वो तो बकचोदी हो जाएगा. That is nice. So we have an option to just delete two elements. Okay, they have given 1000. So if we brute force on x, if it is x, x can be 0 and it can go up to 0 to 1000. Okay, and for each 1000, we can simply go try to do something like, if we can skip two elements simply. If we two skipped two, skipped count will be 2, and then we cannot skip. And if we cannot skip, we cannot take that value. But how to choose to skip the elements? Simply sort. Okay, 3, 3, 5, 5. We can choose x will be 3, and then simply 7 will be passed, and the answer will be kind of x will be 3. Then is 3 plus 3 is 6, and it is not then skip. It is not, then we have to, 3 will not be the answer, then we can, 2 will be the answer, then the minimum is the answer, then 2 is the answer. Simple. We just have to skip. Okay, I found the solution. I can simply, oh fuck up. I can simply copy the initial code from here only. Hmm. And then I can, for int x equals to 0, x is smaller than equal to 1000, x plus plus. Let us try to find the answer. If check pass num1, nums1, nums2, and x, and we have calculated and then pass n. If check is passed, then return x, return -1. No issues. Now we have to write a function check boolean check, and in which we have vector of and address of arr1. I prefer to have a name arr1, comma vector of int address of arr2, comma, but the answer can be inverse, so the answer can range from -1000 to, okay, so -1000, -1000, 2000. Simple. Okay, here int address of x, int address of n. Simply we have a two-pointer logic. We have num1 is greater than greater length, then we can have I equals to 0 and j equals to b0, I guess, 0. And int n and m would be there, so don't calculate it here. Just don't calculate it here. Just don't pass it here. Just simply int n equals to arr1 dot size and int m equals to arr2 dot size. Simple. Now, if while I is smaller than n and j is smaller than m, what we have to do? We just have to do, and skip count would be there. Something skip count would be there. So int skip count would be 0. Now we have to find. Okay, सॉर्ट तो किया है, इसका मतलब वी कैन गो, बट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? एक्स में जाना है हर बार, कोई दिक्कत नहीं, और फिर मैंने सॉर्ट किया है तो मैं क्या करूँगा?
ठीक है, हमें स्किप करना पड़ेगा कभी कभी। मैं क्या करूँगा, इफ ARR1 और ARR1 का I plus X, if it is equals to ARR2 का I J, we can simply increment I, increment J. We have found the match. Else if ARR1 का I plus X, if it is smaller or if it is anything which is not equals to, else में सिंपल हमें करना क्या है, else में हमें क्या करना है, I plus plus कर देना and skip COUNT would be equal or would be plus plus. Simply, if skip count is 3, if skip COUNT is greater than equal to or greater than 2, then return false. Now come out of here. If j equals to m, मतलब j out of चला गया, इसका मतलब पूरा array मैच हो चुका है। एंड अब देखो, skip count होगा 2, skip count होगा 2, तो इसका मतलब I should be 0। अगर skip count होगा 1 तो I should be n minus 1। if skip count होगा, इसका मतलब if skip count is तो 2, then I should be n minus 1। हाँ, skip count पे गेम खेलना है। और 2 कर चुका हूँ मैं, और मैं इस पे देखते हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 20, एंड वी हैव समथिंग 10, 14 एंड 18। वी हैव टू फाइंड समथिंग, ठीक है। सो वी कैन गो फ्रॉम -2, -2 से कैसे चलेगा, नहीं चलता, स्किप, फिर इधर आया, यस चला, फिर इधर यस चला, फिर इधर यस चला, एंड दैट इज विल बी स्किप। तो अब मेरे को सिंपली ये देखना है कि जितने बच्चे हैं, अगर एस स्किप इक्वल्स टू 2 होगा तो आई शुड भी इक्वल्स टू एन होना चाहिए। if skip इक्वल्स टू 1 तो आई शुड भी इक्वल्स टू होना चाहिए n माइनस 1। अगर skip इक्वल्स टू होगा 0 तो आई शुड भी इक्वल्स टू n माइनस 2। नाउ 2 माइनस 2 - s करूंगा, ठीक है, हमें रिटर्न करना है। मुझे कभी कभी तो जो होगा ही नहीं, तो रिटर्न करना है हमें यहाँ पे। हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है हमें, आई शुड भी इक्वल्स टू n माइनस 2 माइनस skip count, so n can be anything and 2 minus skips count can be anything, and I just want that, else return false। अगर वो वहाँ पे पहुंचा ही नहीं तो what the fuck they are doing there, bro, and it is error। what is error, skip count का s will be small, and I guess should work, please work bro, please work for me bro, yes bro, it is working bro, and I think it is more, I don't know what, but it is not, I'm not finding this code good. I will search for the good implementation of this code. Okay, minimum array end. Let us try to understand the problem first. If you are given two integers and an x, you have to construct an array of positive integers nums. We have to we have to construct an positive integers array nums of size n, where every ith element of the nums should be nums of I plus 1 is greater than nums of I. That means we want strictly increasing array of size n called nums, and the result of bitwise and operation between all elements. Okay, okay, all elements of nums is x. Return the minimum possible value of
Huh. Minimum possible value of num minus 1. We have to construct something. We want to find minimum value of that. I just know that minimum value if x is 4 and strictly increasing. Yes, that is very important. Strictly increasing is there. So if 2 is the 2 is the size of array. Let us see only. 2 is the size of array. I want strictly increasing. I want 7 here. Let me show you my pad screen. I want 7 here. And this should be smaller than this. Then what can be the value of this? So I cannot put anything because all bits are set. Then I should put 7 here. If I should put 7 here, then the second element can be anything like last three ones. But I cannot put equal elements, so I have to put something like this. And that it is 15. And that is the answer. Okay, okay, okay. They both are 10 raised to 8. So we have to calculate this in a constant time. Constant time. Let us take a few examples. So bitwise and we will choose LO and will be 0 0 0 1 1 0 1 1, and the output of this will be 0 0 0 and 1. Only two bits are set, then only the answer will be 1 or set. So one thing is clear, every element, one thing is clear, first observation, every element in nums of will be greater than greater than or equal to x. To x, very important. Every element. What the fuck is every element? The first element should be greater than or equal to x. So nums ka 0 should be equals to x. Whatever the minimum we can put, it is the x. Nice, no issue. No issue till now. No issue. Now, if I take an example, if I want x, if there is a possibility of not having answer, but they haven't given the possibility of not having answer, we can we want and will and as a 2, that can be anything. Okay, let me take an example. I want x should be 2 and 2 will be like 0 1 0. I want this and I want n to be 4. Let us take a minimum thing kind of. I want a 4 position I have to fill, and I want this as minimum as possible. ठीक है. Now I have to start with 2 with the minimum possible, and that would be 101. And I need to make sure that this bit is always all fucking ways set. Nice. And if I'm starting with 2, then I know I can add with any other integer and that will end up to the 2, because now anyhow I cannot make this bit set, isn't it, if I do an AND operation with any number of elements. So what can I put here? I can put here 3. Simple. I can put here 3. 1 1. Now I cannot put 4 here. Why? Ask me why. Because if I put 4 here, then that will be 0 0 and this bit is not set. I have to choose a minimum number such that this bit set and this bit is also set, and that is a 6. No issue. No problem. No problem. 6. So 4 is there and I have to choose one more 2. So I can think of it as
I can start with 2, 3, 4, and I have 5. Now 5 will be this kind of thing. And I want to set this again. And that will be this. And this is 7. So minimum answer to this question is 7. Okay, no issue, no problem. Now I can again try to solve this question for two elements. So we have n equals to 2 and x equals to 7. So we have two places to fail and we have only 7. We can increase to 8, but the problem is 8 or with 7 we have to do. 8 or with 7, or we have to return the array. No, we don't have to return array. We just want to return the last element. Nice. If we start with 7, then 7 plus n. I want to take some risk. 7 plus n. No, 7 plus n. 7 plus n minus 1 or or and 7 is x basically. 7 plus n minus 1 or x करके I want to return. I want to take a risk. I want to fucking take a risk. Let me take a risk, bro. Let me fucking take a risk. So how can I? Let's convert and just return. Just take it. Okay, we will try to solve one more example and make it more clear. We have n equals to, let n equals to 10. We want to 10 element and we want the end or of the element, end and of the element should be something like 17, or it can be 5. Let us take a 5. X is 5 and 5 will be 101. Nice. Now we have a 10 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. With my logic, the answer should be x, whatever it is, x is 5 plus 9 or with 10, or with 5. So it will be 9 plus will be 14 or with 5, and 14 or with 5 will be, let's 14 is like 8 plus 2, 8 plus 4 will be 12 plus it is 14, and we have to OR this with 5, and 5 will be 101 and this is 0, and the answer should be 1 1 1 1, and the answer should be 15. Okay, the answer should be 15. Let us try to do this. Okay, so minimum I can choose is 5 101. Now can I choose 6 here? Can I choose 6 here? Let us ask our brain, can I choose 6 here? No, because 6 is not possible because this bit is not set, and I want to set this bit, then it should be 7 only. So it should be 7 only. So it is 7. So this is kind of this structure 7. Now I want this 2 bit always set. Nice. I want, if something is, some bits are there, I want simply this third bit and the first bit should always be set. Now I want to choose something greater than 7. So it could be 8, and 8 is like this. But I cannot choose 8 because I have to choose something having these 2 bits set. And this is basically 8 plus 4. 8 plus 4 will be 12 plus 1 is 13. So this is 13. So I think my logic is hugging, no issue. 13. Now if I go here, I just want this 2 bit to be set. Okay, and greater. So I can choose basically, add this, or this is not set, then I can set this bit, and this bit can be set, and this is 15. 15. Now again I want these 2 bits to be set, and next element will be 16. So 16 is simply this. I want this to be set. Okay, and this 2 to be set, I can set this 2, and I have set this 2, and this will be 16 plus 4 plus 1. 16 plus 4 plus 1. So 16 plus 5, 17, 18, 19, 20. So okay, okay, finding something. What it is? 16 plus 5. So 16 plus 1 is 17. 17 plus 5 will be 22. Okay, 22 is here. After 22, is it actually 22?
If it is one set is here, how can it be 22? 16 plus 1, 70. 17 plus 4. 17 plus 4 will be 21. No issue. Now I want to set minimum bit, so I can set this. So 22, 21 plus 2. 21 plus 2. 23 will be there. Okay. 23 plus 8. So all bits are set. Plus 8. 23 plus 8. Let me calculate. मेरा दिमाग इतना नहीं चलता. What the fuck? 23 plus 8 will be 31, and that's great. So this is 1, 1, 1, and 21 is actually here, and this is 20, 31. Now, the next can be this, and 5 bits are open. Now, I have to set these 2 bits. This is actually 32 plus 5. So, 32 plus 5 will be 37. Now, I have 3 more options. Now, if I have 3 more options, so I can think of this in a way. I have one more option for this. After that, I have again one more option for this. Okay, okay. No, 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 no problem. I have 3 more option for this. Okay, okay. And then after this also I have from this I put something and then I have again 3. Then if I come here, then I have 3 more option. Like 3 bits are unset, then I can set them. Okay, I can only increase the bits, isn't it? I have found something. That is it only. 37. Now from 37 I can increase to 37, 38, 39, and 39 will be 1, 0, 0, 1, 1, 1. After 39 I can add this bit, 8th bit, and 39 plus 8. Basically 39 plus 8 will be 47, and 47 should be the answer. Okay, that is the pattern I am finding. So I have to think of it in this way कि मेरे पास कितने बिट रिका में है या फिर खाली है. अगर मेरे पास 5 था, मेरे पास एक बिट खाली था, तो आई कैन गो 1 आगे आगे जा सकता हूँ मैं 1 प्लेस. ठीक है, देन मेरे पास सारे बिट सेट है यहाँ पे, जितने भी 3 कॉन्जिक्यूटिव सेट है. देन आई हैव टू गो लाइक 7 है, 7 के आगे कोई सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. देन आई हैव टू इंक्रीज दिस एंड दिस विल बी 8. 8 को मैं फिर से और करूंगा 5 के साथ, तो 8 क्या बनेगा? तो इसके अंदर भी एक ही बिट है जो मैं सेट कर सकता हूँ, तो एक बिट और आगे जा सकता हूँ, तो इससे मैं 15 पे जा सकता हूँ. इसमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे ही कुछ कुछ काउंट करना पड़ेगा मेरे को. बिट से दिमाग सोचना पड़ेगा, बिट वाइज.
Hmm. हेलो भाई, यूजर नेम 1011। क्या सोच सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं क्विकली? देखो यार, ये जो है ना n, ये जा रहा है 10⁻8। तो मेरे को आंसर तो ऑफ n में ही चाहिए, एट एनी फकिंग कॉस्ट। ऑफ n, ऑफ n, इसमें कुछ कुछ करना पड़ेगा। बट हाउ कैन आई डू दैट और दिस और देन? I just okay, okay. I have five. In five, I have one zero. Then I have again one more element here. This is seven. Then in seven, I don't have anything. And I have to create one more. And that have again 15. 15 don't have anything. Then again one more. Then one more. Then I have this. Second have then one more, one more, one more, and I can make one more.
Then I have to find number of unset bits. I can simply find this using what the fuck I can think, bro. No, I am getting the idea. Built-in popcorn I can use to count number of ones and then simply subtract with the number of set bits in the upper bound. So it will be 3. 3 minus 2 will be 1. I have 1. Then I have one option to go here. Then after that I have to find the next element. And next element will be 8 or 5. 8 or 5 will be what? And then again I have to find pop count and again I have to go that to that index. ठीक है? नो इशू तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है. What can I think, bro? What can I think? Hmm. Fuck. I don't have any fucking idea to how to do it in efficient way. I have 5. Okay, I have 5. No issue. I have 5. This is our first element. Then for 5, I want to count how many bits are inside. Then what will be the next element? Will be the first bit which is not set. I have to set that. And at any time, I have something like 7. If I have something like at any n into n plus 1 or it is not n, it is the number, number, number and number plus 1 equals to 0, then I know that the that index will be the final and I have to find the next perfect square and that will be num plus 1. 8 and 8 or now the next element will be num plus 1 or num, and that will be the next last element which we have to find and then we have the built-in pop count of that. Simply we have to find the pop count of.
How can I think it in fast way? If I take this same example and I don't want to go till this, I want to go till sixth index. Same example, n is 6 and x is 5. Okay, let us try to simulate what we have think of. We have to find six elements. Given x is equals to 5 and n is equals to 6. So initially x is 5 and 5 is basically 101. So I have put here 101. No issue. Now for 101, I can find what is the maximum number of bit I want to use, and that will be 3. Okay, so I have bit count bit. So I did 3 bit. Okay. Now I simply want to find number of unset bit in this. So how can I find? I can simply check a pop count. Built-in pop count will be 1. Built-in pop count will be 2. And 3 minus 2 would be 1. So I have leverage to find one more element or one more whatever. What the fuck is this? Anything. Then I can go to simply one. I have to set that bit and I can simply find this. Okay. I don't know how I find it, but I find it. Okay. If I have 101, then I have already somewhere in segment tree. If I negate it will be negation of it will be 0 1 0, and if I प्लस 1 करूंगा तो ये क्या बनेगा 1 1 0। अगर इन दोनों का ऐड करूंगा 1 0 1 का और इसका ऐड नहीं और करना पड़ेगा ना, तो ये बनता 7 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे कि A 1 0 1 0 1 बना, ये बना, and if I want to set this bit, then I can negate this, and negation of this will be 0 1 0 1 0, एंड अगर इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 1 1 0 1 0, एंड अगर इन दोनों को और कर दूंगा 1 और करके तो फायदा नहीं है, कुछ करो सेट हो जाएगी ना। यस, यू कैन सी, बट ये भी तो सेट हो रही है 1 0 1 0 1, एंड इसके साथ 0 1 0 1 1 करूंगा तो ये तो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सेट हो जा रही वहां की जो वहां है। तो जब मैं इधर आऊंगा तो मेरे पास होगा कुछ कुछ 1 1 0 1, तो आई हैव दिस, then I again one more, so I can go to one more, and that will be 4 bit set, and this will be I have 2 bit set, I can go 2 bit further. That's like it. How can I find them first answer bit as quick as possible? I don't know what the fuck I'm doing here. I've got 2 questions. I have ranked 4,000, which is not that good. Okay, I have 44 minutes more. What I can do, bro? What the fuck I can do? I want to set this bit. If I want to set this bit, I have to come to this bit and I have to set it. Okay, so I have set it, then it will look like this. But to set this bit, I have to travel whole 62, or it can be 64 bits, because it is in, it should will be in long. If I do 64 bit of every time, that will be problematic. Mm,
This is first, this is second. This is one. Then next element, next will be this. This will be second. Then we can directly jump to that. But if it is going out of bounds, then we can simply calculate one at each. It can help like if we are doing jumps, it help. Let me implement a brute force idea, isn't it? Let us let it be. The brute force idea will be so initially x is what is the x is, and the uh, n will be or n is whatever n is 3 suppose, and x is 4, and I have cnt of 1. So I have put x somewhere, and after that the next bit I have to set. I don't set any bit. Okay, 4 will be this. I know it required 3 bits. Then 2 raised to 3 minus 1 will be triple one. No problem here up till here. Okay, then I can simply count the number of bits. Number of bits will be 2, and the difference between is 2 my okay, what 3 minus 1 will be 2. I have two more options, so I can go to two more. CNT plus 2 should be smaller than or equal to what? Should be smaller than or equal to the what n. If it is smaller than equal to n, so it is actually so 1 plus 2 is smaller than equal to 3, and it is 3 equal to 3. So now I can how can I have 3, and that is basically a number 7. I have to return the 7, but it is written 6, 4, 5, and 6. Hmm. Oh fuck nigga, क्या कर रहा हूँ मैं ये? So basically, if I think basically, basically, यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे देखो, niggers, see here, we have two bits are unset. Then for 2 bit, I have 2 into 2. No, I have two options. For 1 bit, I can 0, 1. For second, again, I have 0, 1. Then basically, for each, I have two options, isn't it? If there are three zeros, then 2 here into 2. So 2 raised to 3 options are there. So if 1, then 2 raised to 1 options are there. So 2 will leave less. 2 raised to and then plus 2 will be there. Then here 2 raised to 3, 0, 0, plus 1 here, plus 2 here, and plus 3. So 4 options are there. Nice. 4 options are there. Hmm. If I have something like 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, then I have 1, 2, 3, 4, and 2 raised to 4 will be 2 raised to 4 will be what? Will be uh, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 दूने 4, basically ये बनेगा 4 गुणले 4 will be 4 दूने 8 and 8 दूने ये बनेगा 16. So 2 raised to 4 will be 16. So I have 16 number range to add to this, and I want fifth element. So fifth will be what? 101 I have to add. So basically, I just want to add first bit set 1 here. Then I have to
Bricks like mm, how can I set fifth bit? I have to find the fifth smallest number. If I think of it as in small range, 1009, and I have 4, but I can think of it like this, and this is 10, this is 10. And if I change 10, and I have 2 and 2 is a 2 into 2 will be 4 option to put something here. So I have 4 numbers more. Then what are that 4 numbers? 4 numbers I can add 0 0 as it is, 0 1 as it is, then 1 0 and 1 1 put at that index. If I put 1 and 0, then it will be this is the next element. This is the second next element, and this is the last element of 1 1. Nice. So I am till here. 4 options I have. If I have two numbers, then 2 raised to 2 pop count options I have, and it is not under that, then I can go to that directly jump to that index. And if I also have, then how can I set? I just want to set. ओनली जीरो पे सेट करना है isn't it? जीरो मिला और जीरो जीरो से में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रीजनेबल सेट करना होता। हेलो सर, बिग फैन। अरे बिग फैन का है भाई, कौन है? मैं कौन हूँ पहली बात तो वो बता। कैसे बिग फैन बन गया ब्रो? डोंट बी अ बिग फैन। क्या सोच रहा हूँ मैं पता नहीं, बस मैं इतना ही सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक्स समझो कुछ भी होता, वन होता, समझो वन होता एक्स, तो क्या बनता? 0 0 1। मेरे पास वन होता एक्स, नेक्स्ट कैन बी व्हाट? मेरे को टू बनाना पड़ता, टू। तो टू वन से बड़ा है, टू है बड़ा, पर टू में ले ही नहीं सकता क्योंकि ये बिट सेट होनी चाहिए थी मेरे को हर बार। तो टू की जगह क्या करता मैं? टू के साथ और कर देता मैं किसको? वन को। ठीक है, जिसमें ये बिट सेट है। तो मेरे को ऐसे नंबर चाहिए, फिर मैं इतने दूर जा भी नहीं सकता। ये बना, थ्री बनाया तो फिर अगला नंबर आता फोर, और फोर के साथ अगर फिर से एक बार और करना पड़ता है, फिर इधर आता मेरे पास एक ऑप्शन फिर है। मैं इधर पूरा सिक्स भी तो ले, सिक्स नहीं ले सकता क्योंकि वो दिक्कत वाली बात आ जाती। तो इधर मेरे को ये पूरा करना पड़ता सेवन, देन आई कैन गो टू द सेवन, देन इधर आता मेरा एट, और एट के बाद नहीं ले सकता तो नाइन ले सकता हूँ, तो नाइन ले लिया। फिर अब इधर मेरे पास कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है, तो मैं इधर से चार जंप लगा सकता हूँ सीधा। एक, दो, तीन। तो ये क्या बनता है? वन जीरो वन वन, वन वन जीरो वन, एंड और एक बनता है वन 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 वन। तो ये बने मेरे चार का एक पूरा ग्रुप कट्ठा। एक बना इसका कट्ठा, एंड एक बना इसका कट्ठा। नाइस नाइस। मैं वन है तो वन के पास फिर बनता मेरे पास 16, मेरे को वन इधर डालना पड़ता, तो मेरे पास तीन है। तो टू रेस टू थ्री विल बी एट, तो मैं प्लस एट होने से सेवन आगे जा सकता हूँ। सेवन, पर ये सेवन यहाँ से सेवन, या फिर ऐसे भी सोच सकता है ना तुम कि जब भी तेरे पास ये आएगा तब तो यहाँ से जितना भी यहाँ पे सेट है, कितना सेट है यहाँ पे, फोर बिट है, तो टू रेस टू फोर आगे जंप कर सकते हैं। टू रेस टू फोर क्यों आगे? टू रेस टू थ्री आगे जंप। अब मैंने कितना सेट किया? टू रेस टू
द नंबर ऑफ बिट अनसेट पे है बहन की। तो इसका मतलब तो नेक्स्ट चार प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो उसके अंदर में तो इसको सारे को सेट कर दे 1 1 1। अगला वाला एलिमेंट सीधा वो बना दे 1 0 0 0 1। क्या उम्र है ब्रो? उम्र है दोस्त 22। The fuck I'm doing? What the fuck? यार इतने लोगों ने सॉल्व किया है तो होना तो मांगता है मेरे से। होना तो देखो मांगता है। रिकर्सिवली सोचता हूँ, रिकर्सिवली मेरे हिसाब से। ओके, कौन सी लैंग्वेज आती है लीड, लीड छोड़ के, लीड छोड़ के, व्हाट द फक। सो रिकर्सिव सॉल्यूशन अगर मैं सोचूं, सोचूं, if I think of recursive solution, what can it be? I have first element x set, no issues, x set है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। And then I have, this is my first element, I tell this is my first element. So think of it in a recursive way that I have a function where I have first element is 1. Suppose my first element is 1 and this is my first element, so I have like send 1 into here. Okay. Then what I will do some operations in this function. So what will be that operations? I have to find how many steps I can go from this element to next element, and if that are valid or not. If that are valid, then I can go to that step. If that are not, then I can simply find the element and return that answer. Okay, so what I am doing is here, I have 30 minutes only, so I have to solve this at any cost. So I have one only, and I can find basically 1 and 1 plus 1, which is actually 2, and it is 0. Then basically I have to go to the next element. And how can I find the next element? Just simply 1 plus 1 is 2 is the next element. Okay, I have to, okay, just think of it, I have to, then that will not be my next element. I have to OR this with something else. So in 2 or 1, जो भी मेरा initial element था, initial x भी I have to pass here. Okay, I will pass x here, no issue. Then that would be 3. Okay, then next function call will be 3 comma second, this is my second element, and that is, now I have x as it is, and x is 1 actually, no issue. Now again, for 3, this is 3, for 3 I can again do the same operation. 3 and 3 plus 1 will be 4, and in and I get 0. If the and is 0, then I have to do one more operation which called as
लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लेना ही पड़ेगा और 4 को और करना पड़ेगा x के साथ विच इज विल बी 5 एंड आई विल कॉल द नेक्स्ट operation can be 5 comma third element is this is third element and x is 1, no problem अब तक, no problem अब तक, 5 is the third element and x is 5, no problem. now मेरे पास आता 5 मेरे पास आता और मैं देखता भाई 5 and 5 plus 1 will be 6, तो 6 क्या बनता मेरा, सो इट इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं है, नहीं है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कितने ऑप्शन है मेरे को रखने के, तो मेरे पास एक ही है, एक ही 0 है, तो 0 का काउंट मेरे को निकालना पड़ता है, हाउ कैन आई फाइंड दैट 0 का काउंट, वो भी एक टास्क है। तो जब भी ये वाला सीन होता तो मेरा आंसर में ये भी प्लस करके मेरे को भेजना पड़ता कि नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, सिंपल। तो इनिशियली मैं नंबर ऑफ बिट सेट करने के लिए वो भी सोच सकता हूँ कि ये मेरे पास इनिशियली मेरे पास होते हैं नंबर ऑफ बिट, जो होता वो होता 0 और वो होता 1, जब मैं इधर सेट करके गया अब मेरे पास होता 2, जब मैं इधर फिर से आया तब मेरे पास 2 होता, तो 2 के बाद ये जब आया तो फिर मेरे पास अभी आता इधर 3, कि 3 नंबर ऑफ बिट सेट है, ठीक है। लीड कोड कोई लैंग्वेज है दोस्त, मतलब 3 बिट मेरे पास सेट है, तो मैं क्या करता सिंपली, इसका पॉपकॉर्न कितना है भाई, इसका पॉपकॉर्न कितना है, इसका पॉपकॉर्न आता भाई मेरा 2, 3 माइनस 2 आता भाई 1 एंड 2 इज टू 1 विल बी 2, मैं क्या करूंगा 5 प्लस 2 के लिए कॉल कर दूंगा फंक्शन, क्योंकि अब मैं जा सकता हूँ, तो क्योंकि 5 क्या है 1 0 1, तो 5 है, 5 प्लस 2 के लिए जा सकता हूँ, बट 5 प्लस 2 क्या है 7 एंड 8 बनता है 6 7, 2 ऑप्शन है, इसका मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं एक ही रख सकता हूँ तो सिंपल, ठीक है, तो मैं क्या करता 5 प्लस 1 के लिए, तो मैं क्या बोलता अभी इधर, पर वो कॉल तो सिंपली आगे वाले को लगा ना, अगर वो उसके अंदर है, तो मैं क्या 7 के लिए कॉल लगा था अभी सिंपल 7, अभी मेरा 7 क्या एलिमेंट होता है भाई, 7 होता है मेरा फोर्थ एलिमेंट, एक ही बिट है एंड थर्ड बिट सेट है, अब 7 क्या है मेरा 7 है तो 8 में आता एंड मेरा नेक्स्ट कॉल लगता भाई 8 और 9 के लिए, 9 मेरा फिफ्थ एलिमेंट है, 1 है, अब मेरे को 4 बिट लग रहे हैं, फिर 9 आता, फिर 9 क्या होता 1 0 0 1, अब देखता 9, वो तो वो भी नहीं है, 9 का पास पॉप काउंट है दो, दो एंड 2 माइनस 4, तो मेरे पास अभी 4 नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ, अगर 4 रेंज के अंदर है तो रेंज क्या होती है एन भी मेरे पास होता, सो 5 प्लस 4 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एन, अगर ये होता और 4 माइनस 1 ही करना पड़ता तो 3, तो मेरे पास सिंपली 3 ही चांसेस है आगे जाने के, तो ये है, तो मैं 3 के लिए कॉल कर दिया, 3 के लिए कॉल क्या होता फिर सिंपली मेरे पास होता 9 है, तो 9 के आगे का कॉल क्या बनता, पर मैं 9 के लिए कॉल ही क्यों करूँ, मैं सीधा जंप क्यों नहीं मारूंगा, सीधा आउट ऑफ द रेंज, आउट ऑफ द रेंज लाइक, मेरे पास अगर 4 होता तो 4 के लिए कितनी बिट लगती मेरे को सेट करने के लिए, 3 बिट लगती, ठीक है, 3 बिट लगती सेट करने के लिए, तो अब मैंने दे दिया 3, 3 मैंने दे दिया 3, फिर मैंने दे दिया 4 और फिर मैंने दे दिया मेरा x या फिर n, मेरा अभी मैं 1 पे खड़ा हूँ, या फिर ये फोर्थ जो है मेरा वो फर्स्ट एलिमेंट है, सिंपल, तो और x भी इधर पास करना पड़ता, तो x क्या है मेरा x 4 है और मेरे पास 3 बिट लग रही है अभी तक मेरी, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगा, मैं सीधा जंप लगाना चाहूंगा जो मेरा लास्ट एलिमेंट, लास्ट नहीं लास्ट के भी आगे का एलिमेंट, तो 4 क्या है मेरा बेसिकली वो 4 वाला ये बना था, तो 4 के आगे का एलिमेंट क्या बनता है, इसके आगे और एक जीरो लगा दो, है ना, जीरो लगा दो, इसका मतलब क्या है 3 बिट क्या सेट होती मेरी, तो ये पूरे 3 सेट बिट हो जाती, और 3 के आगे मतलब +1, तो ये बन जाता 8, तो मैं 8 के लिए कॉल करता, और 8 के लिए कब कॉल करता जब मेरे पास 1 + 4, तो ये 4 ऑप्शन है ना भाई, क्या क्या 4 ऑप्शन है, 1 है,
So 1, 0, 1, this is the option. 1, 1, 0 is the option. 1, 1, 1 only option. But if 4 itself is option, isn't it? मैं सीधे जंप कहाँ पे मारता? ये दो ऑप्शन है, तो मैं जंप मारता इधर, तो इधर क्या होता मेरा? 8 रखा होता है यहाँ पे, 8। और 8 में मेरे को और करना पड़ता इसके साथ। सो दैट इज द आंसर। तो ये इधर जंप कर देता मैं सीधा इधर, यहाँ से इधर। तो अगला वाला कॉल किसके लिए था? बेसिकली ये इसका पॉपकॉर्न बढ़ाने के बाद ये बनता तेरा नेक्स्ट एलिमेंट। पॉपकॉर्न 2 है, तो 2 मतलब 2 रेस टू 2 है, 2 बनता तो ये बनता 4 प्लस करना मेरे को 4। तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनता बेसिकली? 4 उसके अंदर होता तो नेक्स्ट एलिमेंट बनता है मेरा 3 बिट प्लस मतलब 4, और करता मैं 4 के साथ जो भी x है, कॉमा। अब मेरा आंसर बनता वो कौन सा एलिमेंट है, तो 1 प्लस 4, कॉमा 4 एज इट इज रहता है, और अब बिट मेरी 1 प्लस हो चुकी है। तो इसका मतलब मेरे पास अभी होता है ये 12, कॉमा ये क्या बनते हैं 5 एलिमेंट, कॉमा 4, कॉमा 4 बिट सेट है। अब मेरे को चाहिए खाली 6 बिट, खाली 6, वो 12 ही बनता है ना भाई। तो देखते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो पहला होता मेरा 4, फिर बनता मेरा 5, फिर बनता मेरा 7, नहीं फिर बनता मेरा 6, फिर बनता मेरा 7। 7 के बाद कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा सिंपली यही बनता 12। ठीक है, तो फिफ्थ हमारा 12 है, कोई दिक्कत नहीं अब तक। मैं 6 ही ढूंढना है समझो। तो मैं कैसे ढूंढता कि भाई 12 तो है, 12 तो है, पॉपकॉर्न निकलता, पॉपकॉर्न बनता भाई 2, 4 माइनस 2 मेरे पास बनता 2। तो 2 इंटू 4, 4 मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं क्या क्या डाल सकता हूँ 4 ऑप्शन में? 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, और 4 डाल सकता हूँ। 4 मेरे पास ऑप्शन है इधर डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 सेट करूँ, यहाँ पे मैं 2 लगाऊँ, या तो मैं, हाँ यार 0 1 तो खुद ऑप्शन है, 0 0 इज ऑप्शन। तो 0 0 इसका मतलब क्या है? मतलब तीन ही 0 0 इज ऑप्शन, 0 1 इज ऑप्शन, 1 0 इज ऑप्शन, एंड 1 1 इज ऑप्शन ओनली। 12 itself is included, isn't it? तो अगर मेरे को समझो 4 है, और मेरे को अभी मैं 5 में हूँ, और मेरे को 6 चाहिए, मैं निकालता कैसे? वो दिक्कत है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो 1 चाहिए, तो मेरे को एक इसके अंदर और करना पड़ता, तो ये बनता ये 1, जो कि मेरे को सेट करके भेजना पड़ता। सिंपल। सिंपल है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। ठीक है, समझो मेरे को ये भी नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था 10वां, 10वां। तो अब ये 5 है, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ पे जंप करता मैं? तो मैं 4 प्लस कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं 12 को भी इंक्लूड कर चुका हूँ, तो 12 के आगे मैं 4 प्लस करके आगे जंप कर सकता हूँ। और जब मैं 4 प्लस करके जंप करूंगा, तो 5 प्लस 4 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 10, एंड इट इज एक्चुअली। देन हाउ कैन आई 12? तो मैं करता भाई, ये करना है मेरे को, जंप ही करना है, जंप वाला ऑप्शन लेना। तो मैं क्या करता, चारों के चारों सेट बिट कर दो, चारों के चारों सेट कर दिए, 15, 15 प्लस 1 16 बनता। 16 को मैं और कर देता किसके साथ, 4 के साथ, तो ये क्या बनता 16 और 4। तो 1 0 1 0 0, 16 और 4 बनता मेरा 16। तो 18 20, तो ये बनता 20। और मैं 20 होता 9th में। एंड फिर मैं बोलता कि भाई 4 मेरा स्टार्ट है, और मैं अभी हूँ 5 बिट के साथ। सिंपल। अगर मेरे को जंप करना है, जंप नहीं करना है, अब यहाँ पे देखो कितना होता है ये 1 0 1 0 0। अब 3 बिट है मेरे पास, तो मेरे पास है 5 माइनस 2 विल बी 2, एंड 2 रेस टू 3 will be 8, and 9 plus 8
should be smaller than equal to 10, but it is not, then we will hit the base case. It is greater than, तो बेस केस पे जाता मैं समझो, तो मैं कैसे ढूंढता? मैं ढूंढता भाई ये 8 है, अब मेरे को ढूंढ के लाना है कि हमें चाहिए 10 एलिमेंट पे 9 पे खड़ा हूँ, तो 9 और 1 में एक ही तो और है, 9 9 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 9 प्लस 1, 10 और 9 का डिफरेंस निकालता, एंड मेरे को क्या प्लस करना है, बस 0 1 प्लस करना है, एंड दैट आई हैव टू पुट देयर, सिंपल। हम्म अगर मेरे को 9 ही चाहिए होता, 9, हाउ कैन आई फाइंड इट? जो 9 ही होता तो यहाँ पे देखना पड़ता मेरे को, यहाँ पे होता क्या, 5 + 4 देखो तो 9, तो इक्वल टू 9 है, तो मैं जंप करता ना भाई, क्यों नहीं कर रहा? देखो क्या क्या करना है, वो तो कोड करूंगा अभी, 17 मिनट तो लगेंगे मेरे को कोड के, दिमाग की छोड़, देख के ट्राई कर। रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना है मेरे को, थिंक इन माइंड रिकर्सिव सोल्यूशन, मेरे को रिटर्न करना है आंसर, और सॉल्व नाम का फंक्शन लिखूंगा, जिसके अंदर मैं क्या कह दे रहा हूँ, एक्स मेरा इनिशियल एलिमेंट है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट भी है, मेरे पास एक्स फिर से है, और मैं कितनी बिट ले रहा हूँ तो वो मैं इधर देख सकता हूँ, इंटर temp will be equals to x initially, and I want to find count of bits, so int bit will be 0, while temp is greater than 0, मैं क्या करना है, bit plus plus temp divide by equals to 2, और डिवाइड बाई इक्वल्स को मैं लेफ्ट शिफ्ट भी करता हूँ, ठीक है, राइट शिफ्ट भी करता हूँ 2, ठीक है, एंड इससे मेरे को बिट मिल जाएंगी, 3 बिट मिल गई, तो मैं इधर बिट पास कर दूंगा, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। ये जो फंक्शन होगा लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व, इसके अंदर मैं इंट दूंगा लॉन्ग लॉन्ग दूंगा एक्स, या फिर करंट एलिमेंट एलिमेंट, फिर दूंगा लॉन्ग लॉन्ग टी, फिर दूंगा लॉन्ग लॉन्ग एक्स, फिर दूंगा लॉन्ग लॉन्ग बिट, सारे लॉन्ग लॉन्ग ले ले, क्या दिक्कत है, लॉन्ग लॉन्ग बिट, नो इशू। हमें एन भी पास करना पड़ेगा, तो इधर इंट एन पास कर देता हूँ मैं, जो कि यहाँ से आएगा सिंपल, क्या दिक्कत है, करके देखते हैं, नहीं चला तो नहीं चला, अपने बाप का कह जाता। Now this is the function. Now I have two options. First is jump, and second is find actual actual value and return, ठीक है, या तो मैं जंप कर सकता हूँ, या तो फाइंड कर सकता हूँ एक्चुअल वैल्यू, नहीं थम नहीं थमो, अब जंप कैसे करूंगा, और जंप कब करनी है, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई, इंट आप इक्वल्स टू आर, या फिर नॉट सेट बिट्स कितनी है वो निकालूंगा मैं, बिट माइनस बिल्ट इन पॉप काउंट, क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर होता है ना शायद, बिल्ट इन पॉप COUNT पॉप काउंट ऑफ, बिल्ट इन पॉप काउंट ऑफ करंट करंट एलिमेंट, तो ये बिल्ट इन पॉप काउंट कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा आपको, चैट जीपीटी, बिल्ट इन पॉप COUNT, समझो क्या है ये बिल्ट इन पॉप काउंट क्या है, बिल्ट इन पॉप काउंट लॉन्ग लॉन्ग बिल्ट इन पॉप काउंट, ठीक है, तो बिल्ट इन पॉप काउंट अपना लॉन्ग लॉन्ग है, तो लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही कर दूंगा मैं, बिल्ट इन पॉप काउंट लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, करंट एलिमेंट का बिल्ट इन पॉप काउंट आ गया, अब मेरे पास वो होंगे ऑप्शन, पॉइंट OP इक्वल्स टू, वो तो एक है, तो बिल्ट इन पॉप काउंट -1 होगा, तो
नॉट सेट बिट्स। बिट्स बिट्स का मेरे को क्या करना है? उसको करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा भाई। फिर वन को शिफ्ट करना पड़ेगा उतने टाइम। वन को उतने टाइम शिफ्ट करेगा तो तेरे को वो मिल जाएगा। तो चार बन गया होगा तेरे पास, समझो अगर चार बना है तो चार माइनस वन तेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर करंट एलिमेंट होता पांच तो मेरे पास एक दो ऑप्शन होते, पांच कैसे, पांच और पांच इटसेल्फ, और पांच के बाद सात वाला इटसेल्फ। तो मेरे पास एक होता। और अगर जंप कब करूंगा, इफ इट इज नॉट, तो इधर देखूंगा मैं, if cnt plus op it is smaller than or equal to n, then I don't have to jump, then find actual value, then find actual value। एंड से नीचे देखो, सिम 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 सिम, वेट, जैसे कि मेरे पास ये आता 100 होता, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 विल बी 4, तो मैं क्या बोलता 4। पर दिक्कत ये है कि अब मेरे को चाहिए, समझो फोर्थ ही चाहिए होता, समझो। तो फर्स्ट तो ये बना, सेकंड क्या बनता, सेकंड बनता मेरा 101, थर्ड क्या बनता मेरा 110, एंड फोर्थ क्या बनता मेरा 111। ठीक है, तो इसका मतलब पांच मेरा वन इट सेल्फ है, वन प्लस चार करता तो वो पांच बनता, तो वो तो नहीं जमेगा, मेरे को चाहिए था 1 + 3 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू। हाँ, तो यहाँ पे ऑपरेशन -1 करना ही पड़ेगा, -1। अब ये सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। अगर ये नहीं है, एल्स में मेरे को जंप करना पड़ता, मैं रिटर्न करता सीधा सॉल्व करके। क्या सॉल्व करता मैं, तो करंट एलिमेंट मेरा क्या बनता अभी, तो मेरा करंट एलिमेंट बनता वन को मैं शिफ्ट कर देता बिट्स टाइम, बिट टाइम। अरे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बिट टाइम, एंड इसको मैं कर दिया हूँ इतने बार शिफ्ट। 3 बिट होते हैं, है ना, 3 बिट लगते हैं इसके लिए। तो 2 to 3 विल बी 8। तो वन को मैं शिफ्ट कर दिया, समझो वन इधर था, फिर मैंने एक बिट सेट कर दिया, इधर आया, दो इधर आया, तीन इधर आया। तो इसका मतलब वन को अगर मैं शिफ्ट कर दूं 3 टाइम, चैट जीपीटी पूछता, वन राइट शिफ्ट कर दूं 3 टाइम, वन, और आई जस्ट राइट shift 3 टाइम, answer it should be 8। So yes, 3 times the answer will be 8, and after we get 8 I have to or this thing with x। ठीक है, ठीक है भाई, स्मूथ है सब कुछ अब तक, है ना, स्मूथ चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। तो ये मेरा बना फर्स्ट टर्म। देन मेरे को आगे जाना है, तो आगे कहाँ तक जाऊंगा मैं, तो मेरे को बनेगा CNT प्लस OP+1, है ना, OP+1। तो OP तो वो नॉर्मल था, OP+1 पे जाऊंगा अब मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेरा x तो x रहेगा, करंट लिमिट है, x x रहेगा, बिट मेरा +1 हो जाएगा, बिट मेरा +1 हो जाएगा, और एन एज इट इज। ठीक है, इससे मेरा आंसर आ जाएगा, नाइस। अब यहाँ पे देखना है मेरे को, ये तो मैंने जंप वाला ऑप्शन किया है यूज, मैंने किया जंप। अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे करता, तो मेरे पास करंट एलिमेंट होता, और मेरे को ये उसके अंदर ऐड करना है, समझो। तो कैसे सोचा था मैंने, ये कैसे करूंगा करके, एन मेरा 10 है। हम्म सी एन टी नहीं, इंट ए इक्वल्स टू कर दूंगा मैं CNT प्लस OP, एंड मेरे को चाहिए add this, add this will be
kind of n minus a, n minus a, it can be anything, जैसे कि जैसे n minus a, n can be anything। 4 था तो 4 क्या था, 0 0, तो 0 0 में 4 था तो 4 है मेरे को क्या, अगर मेरे को पांचवा चाहिए तो मेरे पास अभी सी एन टी 1 होता, ठीक है, 1 प्लस ऑपरेशन में 3 करता तो 4, 4 होता अभी के लिए, पर मेरे को चाहिए था 5, तो 5 माइनस 4 विल बी 1, तो 1 इसमें ऐड कर दे तो ये 1 बनता, तो मेरे को क्या करना है, ऐड दिस, और रिटर्न करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को करंट एलिमेंट जो भी था वो था, तो मैं एक मिनट, मेरे को कैसे करना पड़ेगा वो, एक रिटर्न कर दूंगा मैं ऐड फंक्शन जिसके अंदर मैं करंट एलिमेंट के अंदर ऐड दिस ऐड कर दूंगा, सिंपल है, कुछ नहीं सोचना कि वहां की चुप, ऐड दिस को भी लॉन्ग लॉन्ग कर देता, सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग वहां की चुप, लॉन्ग लॉन्ग बन जाएगा, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग बना देता हूँ, क्या है बेचारा फिर, कुछ कुछ तो किया है मैंने अब तक। अब जब मैं ये ऐड वाला फंक्शन लिखना है मेरे को, बस सिंपल लॉन्ग लॉन्ग ऐड, इसके अंदर बनेगा इंट ए, इंट लॉन्ग लॉन्ग मेरे पास होगा एक ए, लॉन्ग लॉन्ग होगा बी। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, जहाँ भी बी में, ए में नॉन सेट बिट मिले वो मेरे को, या फिर मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, देखो 64th बिट होगी ना वो, तो 0th बिट, फर्स्ट बिट, फिर मैं देखता सेकंड, फर्स्ट बिट जब भी मेरे को और मिलेगी और इसकी जो भी बिट होगी, आई इक्वल्स टू जीरो कर सकता हूँ, जे इक्वल्स टू जीरो है, और मैं देखता कि भाई 0th बिट जब तक मिलती है तो मैं क्या करूंगा, भाई जे, पर मैं रुकूंगा कब, सोचने की बात है। जैसे कि 1001 ऐसे कुछ कुछ होता है, और मेरे को इसमें दो ऐड करना होता है, जीरो, तो मैं क्या देखता, जब भी पहले जीरो आई तो मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको मैंने सेट कर दिया, अब मेरा आई इधर होता और जे इधर होता, समझो, आई इधर है, जे इधर है, ठीक है, ये 0 0 इधर है, ये भी 0 0 0 इधर है, जैसे मेरे साथ नॉट नॉन सेट बिट आई, मैंने देखा 1 है तो 1 को मैंने तो आई प्लस प्लस कर दिया, सिंपल इधर आया, नहीं ये भी जीरो है और ये, इसका मतलब जब भी जे आईथ में मेरे को कुछ बिट मिलेगी तो मैं सिंपली आई प्लस प्लस कर दूंगा। 63 जाना पड़ेगा ना, मैं क्या करूँगा, इफ मैंने 1 को आई टाइम शिफ्ट कर दिया, 1 को आई टाइम शिफ्ट कर दिया, कर सकता हूँ ना, 1 को आई टाइम शिफ्ट कर दिया और एंड कर दिया मैंने ए के साथ 1 को तो बिट सेट होनी चाहिए थी, तो वो सेट होती तो कैसे सेट करता, या तो फिर ऐसे कर सकता हूँ, ए को शिफ्ट कर सकता हूँ आई टाइम, ए लेफ्ट शिफ्ट आई कर सकता हूँ, और इसको मैं ऐड कर सकता हूँ 1 के साथ, अगर ये, अगर ये सेट है तो कुछ नहीं करना, कंटिन्यू करना है मेरे को, कंटिन्यू, हाँ आई प्लस प्लस हो जाएगा, अगर ये सेट नहीं है तो मेरे को क्या करना है, बी में जो भी होगा, इफ बी को इफ बी को शिफ्ट कर दूं मैं जे टाइम एंड ए एंड 1 करता, तो मेरे को ए वाली बिट सेट करनी पड़ती, तो कैसे करता मैं,
और कर देता, तो इधर क्या करता, ए विल बी इक्वल्स टू 1 को आई टाइम शिफ्ट करना था, तो ये 1 को आई टाइम शिफ्ट कर देता और कर देता ए के साथ। ठीक है, एल्स तो कुछ करना नहीं, एल्स जीरो होती तो जीरो भी सेट करना पड़ता, मतलब ये जीरो था तो मेरे को ए विल बी, जॉर करता था देखो, अगर वो जीरो होता तो जीरो जॉर जीरो वन बन जाता, कोई दिक्कत नहीं करनी थी वैसा, तो जीरो को तो जीरो ही रखना था मेरे को, फिर दिक्कत आ गई। अगर वन वन है तो मेरे को कोई दिक्कत करनी नहीं थी, अगर ये दोनों जीरो जीरो तो कोई दिक्कत करनी नहीं थी। अरे जीरो वन में तो है, फिर जीरो 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 पे तो कुछ करना है नहीं, इसमें वन है तो इसमें वन सेट कर देना सिंपल, तो वो किया, जीरो में जीरो क्यों सेट करना, ये तो हटा दे। और जब भी तू ये करेगा एल्स वाला ऑप्शन इधर तक आ ही रहा है, क्या क्या बेसिकली, या फिर ऐसे ऐसे लग सकता है, तो इसको बेसिकली और इक्वल्स टू कर दे, एंड करना क्या है इधर, जे को प्लस प्लस, एंड दैट्स इट। रिटर्न क्या करना है, ए, भाई क्या हुआ है, आई नो। अब ये आएगा चैट जीपीटी में, अब ये चैट जीपीटी करेगा, ठीक भाई, करेक्ट दिस फकिंग कोड। अब देखो मेरा लॉजिक तो सही है, अब ये कुछ कुछ करेगा। 31, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो 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 करो। ओके, इसने कुछ कुछ बकचोदी करके दिया, लॉजिक तो सिंपल ही रखा है इसने मेरा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, ये इधर दे दूं अगर मैं, हफ्ता हुआ, हफ्ता नहीं हुआ, एक्सेप्ट हो गया, माँ की छूत। मैंने क्या गलती की थी देखो, लॉजिक तो मेरा है, लॉजिक के माँ की छूत तो है भाई, लॉजिक मेरा ही है, यही किया उसने भी, यही किया उसने भी, यही किया है, लॉजिक तो मेरा ही है, बस मैं हक किधर रहा था वो देखने था मेरे को, हक किधर रहा हूँ। मेरा कोड है, ये क्या बोल रहा था, मेजर बग्स यूजिंग वन आई इनसाइड इनसाइड 64 फंक्शन, दिस ओवरफ्लोज व्हेन आई इज ओके, तो मस्ट यूज वन एल यूज करना था, बस इतना ही कर दिया था। इन ऐड वेरिएबल जे इंक्रीमेंट इनकरेक्टली, यू स्किप बिट्स ऑफ बी व्हेन ए हैज बिट वन। ओके, अगर वन हो तो मेरे को उधर भी जे प्लस प्लस करना था, तो मेरे को जे बाहर प्लस करना था, सिंपल सिंपल। अब क्या कहते हैं मैंने, इंस्टॉल ओपी वन वेट ओके कैन ओवरफ्लो, तो इधर भी वन एल करना था, सिंपल सिंपल था। सो इनफाइनाइट रिकर्शन पॉसिबल, बिट ग्रोज, ये तो क्या क्या किया है इसने, मिसिंग करेक्ट लॉजिक फॉर ग्रिड कोड, मेरे में क्या गलत था, 63 तक गया था, तो 63 के इक्वल तक नहीं जाना था, 0 से 63 तक ही जाना था मेरे को। फ्री बिट्स में मैंने ये भी सही किया है, वो भी मैंने भी लिखा था, ये भी किया है मैंने, ये और करके मैंने एक्स करना था वो भी किया है, CNT प्लस वन करना था वो किया है, बिट्स में वो आई सेक्सी लिखा है मैंने सब कुछ। ओके, सब कुछ मैंने सेक्सी लिखा है, बस ये हक दिया था। ये और किया था क्या मैंने, और किया था मैंने वन एल के साथ, अरे तो सब कुछ तो मैंने लिख दिया है बेंचो, क्या गलत लिखा है मैंने फिर, क्यों मिसिंग करेक्ट, लॉन्ग लॉन्ग लुंग लुंग मिस करने से गलत होता है क्या भाई आदमी, ऐसे नहीं करो यार। बाप रे, ये भी चलता है क्या, ऐसे भी था क्या कुछ।
इतना दिमाग तो कभी ना चले मेरा, कभी भी नहीं भाई जिंदगी में। ये तो जो मेरा लॉजिक से हुआ बस, मैं हगा किधर हूँ मेरे को पता है। इधर मेरा कोड देखो यार, ये 63 में हगा फर्स्ट थिंग, फिर ये जे प्लस प्लस बाहर करना था सेकंड थिंग, ये कंटिन्यू कर दिया है जो कि नहीं करना था शायद से। हम्म। फिर बाकी सब तो ये इधर लॉन्ग लॉन्ग करना था। फिर फाइंड एक्चुअल वेट, ये भी ठीक है, ये भी मैंने ठीक किया है। वन लॉन्ग लॉन्ग करना था। इसने देखो वन लॉन्ग लॉन्ग यूज किया है, हर जगह पे वन लॉन्ग लॉन्ग यूज किया है। देखो अगर मैं मेरा कोड यूज, हाँ भाई हो जा क्लोज मार के, अगर मैं इधर मेरा ही कोड डालता तो वो कहाँ है? तो बस मेरे को क्या करना पड़ता, वन एल एल करना पड़ता। सिंपल है। जहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पे सभी को वन एल एल करना पड़ता। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, वन एल एल को मैं शिफ्ट कर देता आई टाइम्स, हाँ वन एल एल, वन एल एल को शिफ्ट कर देता आई टाइम्स, और मैं इसको पूछता किसके साथ, किसके साथ पूछता इसको ए के साथ ऐड करता। और अगर ये अगर वन है तो मैं कंटिन्यू कर देता क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। फिर मेरे को फिर जे को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इसी जगह में वन एल एल को शिफ्ट कर देता जे टाइम्स, एंड देन बी के साथ ऐड करता। इसका मतलब वो सेट बिट है, तो इसको तो मेरे को करना ही, अगर ये सेट बिट है तो मेरे को उसको बी में अगर सेट है तो ए में क्या करना पड़ता मेरे को, और बेसिकली वो नॉन सेट ही रहेगी ऑलवेज, तो मेरे को इसको सेट करना पड़ता। तो मैं वन एल एल करता फिर से इधर, एंड उस वाली बिट को मैं सेट कर देता आई में, ठीक है। एंड जे प्लस प्लस करना था, आंसर में ये रिटर्न करता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं। अब इसको अगर मैं रन करता तो अब देखते हैं आगा क्या है। अगर यहाँ पे भी रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को करना पड़ता वन एल एल, ठीक है। ठीक है, अब भी देखते हैं क्या चल रहा है। तो बिल्ट इन पॉपकॉर्न में भी हक दिया है क्या मैंने? ठीक है, तो बिट माइनस फ्री बिट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और फ्री बिट्स तो भी ये भी सही है, तो लॉन्ग लॉन्ग। क्या हक रहा हूँ यहाँ पे? रुको, यहाँ पे भी देखते हैं। बिल्ट इन पॉपकॉर्न सही है। सी एन टी प्लस ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है उसने। हाय ब्रो हाय। अच्छा बहन चूती है। अब अगर स्मॉलर देन इक्वल टू तो क्यों, माँ की चूत भाई, चूते आदमी हो भाई मैं। ओके, तो इसमें -1 आ रहा है जो कि आना नहीं था, 6 आना चाहिए था। हाँ ब्रो, आई एम इन कॉलेज, अ फकिंग चूतिया कॉलेज। And this will be n minus cnt, which is actually correct.
सिंपलेस्ट ओपी क्यों नहीं दें? मैं बस कितना था एंड मेरे को कितना आगे जाना है उतना ही करना, तो ओपी क्यों करूंगा, छूती है। अच्छा, तो मेरे लॉजिक से भी हो जा रहा है, मतलब मेरा ही लॉजिक है, वो क्या चैट जीपीटी खुद का कुछ कर नहीं रहा उधर। पर बस मैंने ये वाली कंडीशन हक दिया था जो कि हकना नहीं था, और एन माइनस सी एन टी, तो और एक रॉन्ग सबमिशन और 10 मिनट के बाद मैं इस लॉजिक के पास आता था, इसका मतलब मैंने सही किया है कुछ कुछ। मैं हूँ मतलब, अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच ये लॉजिक ला रहा हूँ तो मैं हूँ, दिमाग तो चलता है मेरा। जरा फास्ट आना मांगते हैं, जो कि मैं हक दे रहा हूँ, फास्ट तो नहीं आ पा रहा हूँ। ये इसका देखते हैं जरा जाके, इन लोग कैसे कोड कर रहे हैं भाई। 7 मिनट में कर दिया भाई बंदा। फिर वीडियो ही देखनी पड़ेगी मेरे को इसकी भाई। इतना अगर कोई शॉर्ट में कैसे कर दे रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन, सबमिशन में नहीं जाना मेरे को, इधर भी कुछ नहीं करना मेरे को, इधर जाना है मेरे को, इधर जाना है, और मेरे को देखना है कॉन्टेस्ट। भाई 3 साल करने के बाद 31 कैसे आ सकते हैं, पता नहीं। 31 आए कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा इधर, मेरे को देखना है थर्ड में, उसका पढ़ना है मेरे को। भाई लीड कोड के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं। भाई प्रैक्टिस करो, क्या करोगे। हम्म। बिट मैनिपुलेशन भाई, एक ही टैग दे दिया बेंच। सोल्यूशन किसी किसी ने लिखा है, कुछ कुछ नहीं मिला है। ऑफ है। कौन ला रहे भाई ऐसे सोल्यूशन। क्या क्या, रिजल्ट इज एक्स, ठीक है। रिमेनिंग इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो एक्स है तो एन माइनस वन रिमेनिंग पड़ेंगे। पोजीशन, ये क्या है, ठीक है, तो वाइल रिमेनिंग जब तक, इफ नॉट ऑफ एक्स एंड पोजीशन, एक्स एंड पोजीशन, तो पोजीशन वन है, अगर वन एंड ओके, पहली बार सेट नहीं है तो मैं उसको सेट कर दूंगा। तो रिजल्ट आर इक्वल्स टू रिमेनिंग एंड वन इंटू पोजीशन इंटू वन, रिमेनिंग को राइट, मतलब रिमेनिंग दो गुना बन जाएगा। रिमेनिंग कितना था मेरे को, तो रिमेनिंग, भाई ये क्या है, कौन करता है ऐसा, किसी को नहीं पता ये क्या है। रस्ट। ये कितने सोल्यूशन लिख दिया है। मेरे इसके टाइम कॉम्प्लीट गया, अगर मैं इसको सबमिट करूं। ये तो जीरो दे रहा है। वाह फैन। ठीक है मतलब। लास्ट वाले का क्या है सिस्टम।
बाप रे। चलो थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प लेने के बाद अपने थर्ड थर्ड तो मेरा लॉजिक से था, मेरे पास कुछ एरर आ रहा था जो कि मेरे को आज मैं एक से और बात सीखा। उसको उसको मैं बोल सकता हूँ कि जब मेरे को लॉन्ग लॉन्ग को शिफ्ट करना है तो 1L यूज करना है, सिंपल सी बात है। और कुछ कुछ चीजें जरा और डीपली विजुअलाइज करनी पड़ेंगी। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडेज practice session. That's it from my side. Thank you.